Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear watchers and viewers. Uh, so far we have done half of the narration, half of direct, indirect. We have seen that how a reporting verb and a reported speech in direct speech change into an indirect speech by using different specific rules, particular rules, general rules. And we have been able to complete, the direct speech changed into an indirect speech in different, tenses, corresponding tenses. Then we equally saw that how different sentences, there are many sentences in direct speech where verb does not undergo any change. And today we'll see when a reported verb is in the past tense and reported speech too is in the past tense. We have seen yesterday that the verb of the reported speech changed into its third form, and before that third form we use had to balance this kind of equation to change it from direct speech into indirect speech. Then if a sentence is in direct speech in past tense, in past continuous tense, what will happen to it when we will change it into its indirect speech? Let's see. Normally there's a rule when the reporting verb is in the past tense, reported speech is in the past tense, and in indirect speech we change the tense of the reporting speech into its third form. Before that we use had. Similarly, in this tense, when a reported verb is in the past tense and reporting verb is in the past tense and reported speech is in past continuous tense, we do the same. We change the verb into its third form and then we use had. Let's see. For example, she said, I was reading a book yesterday. I was reading a book yesterday. Now, according to the previous rule, what we do actually, she said, ऐसे रहेगा. Inverted commas will be changed into that. I चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे she, तो ये I चेंज होगा she में. was की थर्ड फॉर्म है being, तो लगेगा being. फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे रहेगा book. yesterday चेंज होता है previous day. तो सेंटेंस बनेगा she said that she had been reading a book previous day. But sometimes this tense takes actually since and for. Since and for is mandatory to mention. Okay, now we will see how to change a sentence that shows future but is not actually a future tense, is not in future tense as well. Okay, what we do actually, look, for example, she said, comma, inverted commas begin, my husband leaves for Delhi tomorrow. Okay, she said my husband leaves for Delhi tomorrow. अगर देखें तो leaves जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में है. Leave is in the first form of the verb, but this sentence
indicates future, a planning has been already made. तो उस सूरत में इसको क्या हम will या shall लगाएंगे या would लगाएंगे या क्या करेंगे? देखिएगा ऐसे में क्या होता है. She said that my change होगा. ये she says my, तो हम जब कहेंगे तो हम कहेंगे she said her, तो her change होगा, my change होगा her, तो husband में husband, तो इसको पास में चेंज करने के लिए वुड लगाते हैं, तो कहेंगे वुड लीव फॉर Delhi. Tomorrow will change into next day. Okay? She said, my husband leaves for Delhi tomorrow will be changed into indirect speech by saying that she said that her husband would leave for Delhi next day. Okay? Now we will see this leaves when changed into past will not take left, it will take just would, because this shows future tense. Okay, तो इसका would आता है. तो then we'll move to another part of it, that is questions. जब questions होते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो क्या होता है? देखिएगा, दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. एक WH क्वेश्चंस होते हैं और एक टैग क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स यस नो क्वेश्चंस. जब WH क्वेश्चंस होते हैं तो क्या होता है, और जब यस नो क्वेश्चंस होते हैं तो क्या होता है? तो जब यस नो क्वेश्चंस जैसे ही होते हैं लेकिन यस नो क्वेश्चंस नहीं होते तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में शैल वी या शैल आई से शुरू होगा तो इट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट, इट इज़ जस्ट एन ऑप्शन. तो उस वक्त ऑप्शन होती है. जब ये ऑप्शन होती है तो इस वक्त शैल चेंज होता है शुड में. नॉर्मली शैल चेंज होता है वुड में, लेकिन यहाँ पे शैल सीधे शुड में चेंज होगा. वो कैसे मैं लिखूँगा? ही सेड शैल आई shut, shall I open the door, shall I open the door, क्या मैं दरवाज़ा बंद करूं? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, मीन्स he is asking something to be done for, to be done, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन he is not fully authorized to do that, he is asking permission. ठीक है? तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है? तो said चेंज होगा ask में, तो ये कहेंगे he asked whether he asked whether he should open the door, whether she should open the door. अब देखिएगा whether क्यों लगाया मैंने? It's an option, it's not his discretion. If it had been his discretion तो मामला कुछ और होता. तो यहाँ पे ये किसी से पूछता है, मतलब इट्स अ चॉइस टू ओपन द डोर और टू रिमेन इट शट. तो जब भी कोई ऑप्शन होती है, कोई चॉइस होती है, तो इफ़ नहीं इस्तेमाल करते हैं बल्कि वेदर इस्तेमाल करते हैं. ठीक? एक्चुअली ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे टैग क्वेश्चंस में आते हैं. टैग क्वेश्चंस मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स से शुरू होते हैं, जिनको हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं. तो इनको हम कैसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ही सैड आर यू अ टीचर.
ही सेड आर यू अ टीचर। सवाल है ये, सवाल पूछता है आर यू अ टीचर। तो ऐसे में क्या होगा, सवाल जब पूछते हैं तो आस्क सेड में सेड चेंज होगा आस्क में। तो हम कहेंगे ही आस्क्ड आर यू अ टीचर। यहाँ पे इन्वर्टेड कामास को इफ से रिप्लेस करते हैं। इफ यू चेंज होगा आई में। इफ आई, अब कहेंगे आप यू कैसे चेंज होगा आई में, क्योंकि आई एम बीइंग आस्क्ड, ये मुझे पूछता है या मुझे पूछ रहा है या मुझे पूछता है क्या कि आप टीचर हो। तो मैं जब किसी दूसरे को बोलूँगा तो मैं यही कहूँगा कि वो मुझे पूछता है कि कहीं मैं टीचर हूँ। ठीक, तो इफ़ आई वॉज अ टीचर। अब देखिएगा यहाँ दो किस्से हैं, इफ़ आई वेयर टीचर, इफ़ आई वॉज टीचर। ठीक, दोनों ठीक है। अगर हम ये कहेंगे इफ़ आई वॉज टीचर, इट्स द नॉर्मल रूटीन वे ऑफ सेइंग आई के साथ वॉज आता है। लेकिन जब भी आई से पहले इफ़ आता है तो आई के साथ वॉज नहीं लगता, बल्कि इट बिकम्स अ कंडीशन, तो उसके साथ वेयर लगता है। ठीक, इफ़ आई वर अ टीचर ये भी करेक्ट है, इफ इट्स अ काइंड ऑफ कंडीशन, बट वेयर इट्स नॉट अ कंडीशन वी यूज इट इफ आई वॉज अ टीचर। ठीक, दूसरा, he said to me, comma inverted commas begin, do you like tea or coffee? ठीक, do you like tea or coffee, यानी दो चीज़ों में चॉइस है, टी और कॉफ़ी में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे मैंने कहा चॉइस होती है तो वहाँ पे हम इन्वर्टेड कामास को रिप्लेस करते हैं वेदर से। तो क्या कहेंगे, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामास के बदले वेदर, यू फिर से चेंज होगा आई में, आई लाइक की सेकंड फॉर्म है लाइक्ड, वेदर आई लाइक्ड टी और कॉफ़ी। ठीक, वेदर आई लाइक टी और कॉफ़ी। ठीक, तो ये हो गया जनाब डबल क्वेश्चन जब होते हैं, ये सॉरी जब टैग क्वेश्चन होते हैं, जैसे डू है, इज़ है, आर है, हैव है, हैज़ है, शल और विल भी है। ठीक, तो अब यहाँ पे चलते हैं डबल क्वेश्चन पे। जब डबल क्वेश्चन होते हैं तो व्हाट हैपन्स एक्चुअली, व्हाट वी डू। फॉर एग्जांपल ऐसे होगा, शी ही said to me, what is your name? What is your name? तो यहाँ पे what से सवाल पूछता है, तो जहाँ पे what से सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कामास को हम डायरेक्टली रिमूव करते हैं। We don't actually use any conjunction, neither if, whether or that, we don't use any of them. So said फिर से चेंज होगा asked में, क्योंकि सवाल है, he asked me what, ऐसे ही रहेगा, what my name was। अब देखिए मैंने क्यों इसको, ये सवाल लगता, सवाल ये लगना नहीं चाहिए, what my name was, it should sound like a statement। what my, अगर मैं ऐसे लिखता what was my name, ये अगेन अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बनता। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन पहले लगाते हैं और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाते हैं और उसके बाद इस वर्ब को लास्ट पे ले लेते हैं। ठीक, और इसको चेंज करते हैं। तो he asked me what my name was, इस तरह एक है, he said to his friend, he said to his friend, क्या कहा, where do you live, where do you work now। ठीक, अब इसको क्या करें, he asked, he said चेंज हुआ he asked में, तो क्या कि he asked his friend, वो अपने दोस्त से पूछता है
पूछा है उसने क्या कि आप कहाँ पे काम करते हो आज, यानी तुम दोह क्या उस काम कर, तो विल यूज इट लाइक दिस, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही, यू चेंज होगा ही में, क्योंकि ये थर्ड पर्सन से ही पूछता है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वर्कड देन, नाउ चेंज होगा देन, तो ठीक क्या बनेगा, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वर्क्स देन। हम ऐसे डू को निकाल भी सकते हैं, डू के बदले हम डिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर डिड ही वर्क, वर्कड नहीं आएगा क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म पहले आई, वेयर ही वर्क, वेयर डिड ही वर्क देन, लेकिन इट विल अगेन साउंड अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन शुड नॉट साउंड लाइक अ क्वेश्चन, इट शुड नॉट सीम लाइक अ क्वेश्चन, इट शुड सीम अ काइंड ऑफ नॉर्मल स्टेटमेंट। तो ये भी क्लियर हो गया। Inshallah, in the next video, we'll be talking about the imperative sentences, how we change imperative sentence from direct speech into an indirect speech. This will be done tomorrow because it takes much time to get uploaded such videos with 2G speed. Thank you very much. Tomorrow we'll meet again.